Morning students, today we are going to understand sum number 9 from accounting for share capital. Sum number 9, Nanavati Limited of Junagadh issued 3 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share. Amount was called up as under. इस तरह से अमाउंट मंगवाई गई है स्टूडेंट्स. यहाँ पर जो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यहाँ पर 5 रुपीज़ प्रीमियम है और 3 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है. Company received application for 3,50,000 shares. Excess applications were rejected and money paid thereon was refunded to applicants. All the sums due were received in full except allotment and final call on 3,000 equity shares held by ICERA. तो allotment in arrears, allotment के टाइम पर है, calls in arrears, final call के टाइम पर है. Then students pass journal entries in the books of company. जनरल एंट्रीज पास करेंगे 3,50,000 शेयर्स पर. फर्स्ट 2 एंट्री देंगे. बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. वैल्यू विल बी 14 लाख. Being applications are received on 3,50,000 shares. सेकेंड एंट्री देंगे स्टूडेंट्स. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 बैंक अकाउंट. ₹14 लाख कंपनी अलॉट करेगी 3 लाख शेयर्स को. मल्टीप्लाई बाय 4 12 लाख. कंपनी रिजेक्ट कर देगी 50,000 शेयर्स को. 4 रुपीज़ पर शेयर 2 लाख. नरेशन बीइंग applications are allotted on 3 lakh shares and rejected on 50,000 shares. अलॉटमेंट मनी कॉल करेंगे स्टूडेंट्स. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. Here premium is given, so 2 security premium account. 3 लाख शेयर्स पर अमाउंट कॉल करेंगे स्टूडेंट्स. 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 24 लाख. कैपिटल में जाएगा कॉस्ट प्राइस 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 9 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 15 लाख. नरेशन being amount of allotment is called with premium. अब ये अमाउंट मिलेगी स्टूडेंट्स. जनरल एंट्री देंगे. बैंक अकाउंट डेबिट. एट द टाइम ऑफ allotment there is arrears. Then we will write allotment in arrears account debit. 2 equity share allotment account. 24 लाख. अलॉटमेंट के टाइम पर 3,000 शेयर्स पर अमाउंट नहीं मिलती.
₹8 नहीं मिलते, मीन्स 24,000। 24 लाख में से माइनस कर लेंगे 24,000, कंपनी को अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगी 23,76,000। नरेशन बीइंग amount of allotment is received except 3,000 shares. फाइनल कॉल अमाउंट कॉल्ड करेंगे स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 lakh multiply by 3 at the time of final call. ₹3 are called per share. 3 lakh multiply by 3 करेंगे तो 9 lakh आएगा। नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल is called on 3 lakh shares. अभी अमाउंट मिलेगी स्टूडेंट्स, देन एंट्री देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स है, देन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे 9 lakh एंड ऑन 3,000 shares ₹3 is not received by the company, means 9,000 is not received। 9 lakh माइनस 9,000 करोगे 8,91,000 पर अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। Narration being amount of final call is received except 3,000 shares. Then students सम पूरा होता है तो टोटल करेंगे 14 lakh plus 14 lakh plus 24 lakh plus 24 lakh plus 9 lakh plus 9 lakh. Total will be 94 lakh. Total amount 94 lakh. स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 9। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।